Now we start the chemical property of acid. Describe the chemical property of acid. First of all, we have explained before this, when acid react with metal, it form of a metallic salt and hydrogen gas. Property number 2, how do metal carbonate, means metal carbonate CaCO3, MgCO3, CuCO3, this is known as the metal carbonate, and a metal hydrogen carbonate NaHCO3, बीच में हाइड्रोजन आएगा इसलिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं विद एसिड. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. व्हाट हैपन व्हेन द metal react with carbonate and metal react with hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate. First of all, we see the diagram. Here diagram, this is the test tube, इस पे A नोट किया हुआ है. सेकंड टेस्ट ट्यूब ले लो, इसके अंदर B नोट कर दो. with help of the thistle funnel add the dilute hydrochloric acid. Now here is sodium carbonate piece. Now chemical reaction take place in between them. Gas is produced. Gas is passing with help of the test tube and calcium hydroxide solution है इसके अंदर. A become the whitish in color. This is the delivery tube. Test tube contains calcium hydroxide. When the carbon dioxide gas enter in calcium hydroxide solution, it becomes CaCO3, calcium carbonate plus H2. H2. Now we see the activity. Take two test tube label as A and B. Take about the 0.5 gram of the sodium carbonate Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaCO3 in test tube B. First of all, we take the two test tube. In one test tube, it contains sodium carbonate. In second test tube, it contains the sodium bicarbonate, means NaCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या NaCO3 बोलो, दोनों सेम है. Add the 2 ml of the dilute hydrochloric acid in both test tube. What observe? Pass the gas produced in each cases through the lime water calcium hydroxide solution. Lime मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर मतलब H2O, CaO plus H2O, it forms CaOH twice. CaOH twice. This is known as the calcium hydroxide, means lime water, as shown in figure and recorded observation. Now we see with help of the chemical reaction. The reaction occurring in the above activity written as test tube A, sodium carbonate which is in solid form plus hydrochloric acid aqueous form, it form a NaCl, means salt, namak plus H2O, water and carbon dioxide is formed. Now in test tube second, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate या sodium bicarbonate adding with the HCl, NaCl is formed, H2O plus CO2. On passing the carbon dioxide gas evolved through the lime water, CaOH twice plus CO2. The chemical reaction take between lime water and carbon dioxide is formed calcium carbonate. This is known as the white precipitate. और जैसे मार्बल होता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. चूना का पत्थर होता है,
is equal to calcium carbonate and water is formed. Now on passing the excess carbon dioxide in following reaction take place. When the calcium carbonate is formed, when excess amount of the carbon dioxide is added, then CaCO3 plus H2O plus CO2 CaHCO3 twice. Solution in water. Calcium, hydrogen, carbonate, limestone, chalk, marble, different form of the calcium carbonate. तो give the example of the calcium carbonate. तो लाइम मतलब चूना का पत्थर, जो चौक होता है ब्लैक बोर्ड लिखने वाला चौक है, मार्बल आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल मिनरल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, give the corresponding salt, carbon dioxide and water. When the calcium carbonate and calcium hydrogen carbonate, then all metal carbonate or the all metal hydrogen carbonate react with acid, each form salt, carbon dioxide and water. Thus the reaction can be summarized as follow, written as follow: metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus acid, it form salt, carbon dioxide in water. Now we take second property. How do acid and base react with water? How do acid and base react with water? This property contain in basic property and in acidic property. Acid plus base, it form a salt and water. Base plus acid is form a salt and water. So acid plus base give salt and water. Now we take activity. Take a 2 ml of the dilute NaOH. NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा है मतलब पीछे बेस है. In a test tube, add 2 drop of the phenolphthalein. The solution आगे आ गया and this is the indicator है. What is the color of the solution? Add dilute HCl to the above solution, drop by drop. There any color will be changed. Read with the mixture. Why does the color of phenolphthalein change after the addition of the acid? Now add the few drop of the NaOH in mixture. Does the pink color of the phenolphthalein reappear? Why do the thing has happened? मैंने ये सब पहले टेबल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, अभी एक्सप्लेन करता नहीं हूँ क्योंकि टेबल कम से कम 11 केमिकल प्रॉपर्टी 11 केमिकल का है. इन दिस एबो एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ बेस इज multiplied by the acid and vice versa. The reaction take place written as NaOH मतलब base, HCl मतलब acid, NaOH, Na मतलब sodium, OH मतलब hydroxide, sodium hydroxide, hydrochloric acid is formed NaCl. This is the salt and water is formed. The reaction between acid and base to give a salt and water is known as the neutralization reaction process. In general, neutralization reaction method can be written as base plus acid, it form a salt and water. So what is the neutralization reaction acid and write is chemical formula. Most important, what is the neutralization reaction? Write is formula. When the acid and base react with each other,
salt and water is formed. This is known as the neutralization reaction. This reaction is known as the generalization reaction. Acid, base plus acid, salt and water. बेस मतलब NaCOH, ऊपर वाला इक्वेशन है NaOH प्लस HCl, NaCl plus H2O. This is the chemical equation of the neutralization reaction. अभी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अभी पूछा था कि व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. राइट द केमिकल इक्वेशन. व्हेन reaction between acid and base, it gives the salt and water. This phenomena is known as the neutralization reaction. In general, it is known as the base plus acid. It forms a salt plus water. We write the equation. This equation NaOH plus HCl give NaCl plus H2O. Now we write the another property. Reaction of metallic oxide with acid. मेटालिक ऑक्साइड मेटल है, इसका ऑक्साइड ले लो. टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड. हियर कॉपर इज मेटल ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड. बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से हैं? तो कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है. दे आर द नॉन नाइट्रोजन है, दे आर द नॉन मेटल. बट कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम दे आर दी मेटालिक. पीछे वो लगा दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. तो कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग इट. स्टरिंग कर दो मतलब इसको हलाओ. मतलब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया. स्लाइड से मतलब स्लाइड स्टडी कर दो. नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड? यू नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व. व्हाट हैपन व्हेन द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक कॉपर ऑक्साइड dissolve in dilute hydrochloric acid and color will be changed. Color become blue greenish color. The blue green color of the solution due to formation of the copper. तो ब्लू ग्रीन कलर क्यों प्रोड्यूस हुआ? कि जो कॉपर प्रोड्यूस हुआ है कॉपर के हिसाब से होता है. नंबर 2, क्लोराइड इन द रिएक्शन. General reaction between the metal oxide and acid can be written as metal oxide plus acid. This becomes salt and water. A metal oxide plus acid, it forms a salt and water. These are the chemical properties of the acid. Now बेस की प्रॉपर्टी भी अबव जैसी है, नया अलग एक्स्ट्रा दी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस की क्या थी? प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ द बेस विद एसिड इज फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर. मीन्स एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टी थी इसको उल्टा के पीछे लिख दो. पहले बेस लिखो, बाद में एसिड लिखो, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा. ये लिखा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड with a base. You saw the reaction between carbon dioxide, oxide of non-metal because carbon is non-metal. Sulfur dioxide, SO2, sulfur is non-metal oxide, therefore SO2, CO2, SO2 and calcium hydroxide means lime water. Lime water, calcium hydroxide which is the base, react with the carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is the similar to
reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. For MCQ में आ सकता है कि non-metal oxide are dash in nature. Option A acidic, number 2 number B base, number C neutral. None of these, not acid, but no one can found. So non-metallic oxide are in acidic in nature. Now here exercise of the science textbook, मैंने पूरा जो वीडियो बनाया हुआ है इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आई कैन एक्सप्लेन इट. वाई शुड कर्ड एंड, कर्ड मतलब दही, कर्ड एंड सोवर सब्सटेंस खट्टी चीज़, कैन नॉट केप्ट इन ब्रास मतलब पित्तल, ब्रास एंड कॉपर विसल. वाई शुड कर्ड एंड सोवर सब्सटेंस आर नॉट केप्ट इन ब्रास and copper substance. So answer, we should not take curd and sour substance, kept curd and sour substance cannot kept in brass and copper because curd and sour are in acidic nature. When it reacts with brass and copper, the poisonous substance means damage to health. इस टाइप का जो सब्सटेंस है, दिस इज द पॉइजनस सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस. देयरफॉर इट कैन नॉट kept in the brass or copper vessel. So why should curd and sour substance not kept in brass and copper vessel? So let me start the answer. Curd and sour substance are the sour in taste. This means it is the acidic nature. When acid combined with the brass and copper, the poisonous substance या damaged substance या improper substance are produced, which is the inhabited for the health. Either other type of effect of the health या microorganism, therefore it cannot take in the brass and copper vessel. Now question number 2, which gas is usually liberated when acid react with metal? Illustration, the example, how will you test the presence of the gas? When metal react with acid, it form a hydrogen gas. आगे आ गया, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मूला बाद में इक्वेशन लिखने का है. कभी कॉपर प्लस HCl CuCl2 प्लस हाइड्रो H2 Cu plus H2SO4 CuSO4 plus H2. How to test the presence of the gas? When reaction take place between zinc and acid, is form a hydrogen gas. It passing through the soap solution, bubbles produced. When the burning candle near with it, the pop sound blast. The gas blast with pop sound, produce the pop sound. Therefore, it is the hydrogen gas. Because the property of hydrogen gas is that when it burn in open air, it become blast or become the pop sound. Now question number 3, metal compound A react with the dilute hydrochloric acid and produce the appearances. This gas evolved in antiquity burning candle, while a balanced chemical equation for the reaction in one of the compound form a calcium chloride. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीन क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स A plus HCl
It produces the inflorescence gases extinguisher burning. तो कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 प्रोड्यूस होगा. नंबर सेकंड, इट इज़ गिवन दैट कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा. तो गिवन सब्सटेंस इन ए इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो CaCO3 plus HCl, it give CaCl2 plus CO2 plus CO2. This is the answer. Thank you.